Hello everyone, myself Vikram sir. I have been teaching mathematics for more than 15 years and I have taught more than 30,000 students till now. Uh, I welcome you to the expert guidance lecture for Mathematics 1. As we all know, maths is one of the subject in which we can score full marks. Today we are going to discuss few important points by applying which students can score maximum possible marks, rather 40 on 40 in Mathematics 1. In order to do that, let's understand your paper distribution. Mathematics is total of 100 marks, in which it is divided into two parts: written examination for 80 marks and practical examination for 20 marks. In written examination, 40 marks for maths 1 and 40 marks for maths 2, right? And for practical examinations, 5 marks for journal submission and 15 marks for problem solving, or you can say practicals, right? Those marks are given by your colleges, respective colleges. In order to score full marks, this is very important thing, the paper pattern. As we know, for every sport or for every game, understanding rules is very important. If you know the rules perfectly, you can perform better. In maths, or you can say in maths 1, understanding paper pattern is very important. So let's understand this. In maths 1, the question 1a, or rather the full question 1, consists objectives. In question 1a, there are 6 multiple choice questions, 1 mark each for 6 marks in total. In B, 3 true or false type questions, 1 mark each for 3 marks total in total. C, 3 fill in the blanks type questions, 1 mark each, again total for 3 marks. Now students, you can say this is a game changing question. As you know, in cricket, in the beginning, जैसे हम लोग बोलते हैं कि starting के ओवर्स power play के ओवर्स रहते हैं, correct ना? Or in which batsmen try to score maximum possible runs. Similar way, this question 1 is nothing but power play question for us. इसमें 12 total, there are 12 marks for question 1, 6 plus 3 plus 3. So our aim should be, we should score 12 out of 12 in question 1. But we observe normally students lose a lot of marks in these objectives. And believe me, most of the questions will be from your textbook. For example, your miscellaneous question number 1, it consists in all these questions, MCQs, true and false questions, as well as fill in the blanks, right? Wait. But even if it is scoring question, most of the students lose a lot of marks in this question. Reason being our approach. Now, what I'm trying to tell you, that most of the students say, sir, थियरी हो जाएगा ना तो ऑब्जेक्टिव्स तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव्स देखते ही नहीं है. और कोई कोई क्वेश्चन सर थियरी में इतना, स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि सर थियरी में इतना टाइम चला जाता है कि ऑब्जेक्टिव के लिए टाइम ही नहीं बचता है, ठीक है ना. सो दीज आर द मेन टू एस्पेक्ट्स, टू reasons normally students don't practice objectives at home and they rather go directly in the exam. But I request you to practice all the objectives thoroughly from each and every topic. What you can do, if you are practicing any chapter, before completing its objective, don't go for the other chapter. Complete the objective for that particular chapter after theory and then go for the other chapter. So you'll have a track on the objectives as well. Okay, so we'll ensure कि 12 में से 12 मुझे मार्क्स कैसे मिले. ओके, सो विल डेडिकेट एक स्पेशल टाइम फॉर दीज ऑब्जेक्टिव्स. कुछ अलग से टाइम इनके लिए रखें कि हर टॉपिक के बाद मुझे इतना टाइम इसके ऑब्जेक्टिव्स करने ही है. ओके ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2a. क्वेश्चन 2 onwards we have theory based questions. In question 2a, solve any 2 out of 3, 3 marks each, so total 6 marks. Question 2b, solve any 2 out of 3, 4 marks each, total 8 marks. Question 3a, solve any 2 out of 3, 3 marks each, total 6 marks. Question 3b, solve any 1 out of 2, 4 marks each, total 4 marks. And 3c, solve any one of the activity, 4 marks each. We have to attempt one activity for 4 marks. Again, this is again neglected, you can say, question. Students normally don't practice activities. What I'll suggest, you practice activities from the textbook.
Textual activities normally get repeated. So please ensure that you are going through all the activities of your textbook. Okay, let's go for the next slide. Chapter wise distribution of marks. These are marks with options for every topic. Mathematics logic for 8 marks, matrices for 8 marks, differentiation for 7 marks, application of derivatives 9 marks, chapter 5 integration for 7 marks, definite integration 5 marks, application of definite integration 4 marks, differential equation and application for 10 marks. So total 58 marks. So 58 marks with options. Out of 58 marks, you have to attempt for 40 marks. Okay, next one, suggested sequence for practice. Now, how you can start the topics? What should be the sequence? What is the easier way to complete the portion? Okay, so we'll start with the easier topics for student. For example, chapter 1 and chapter 2, logic and matrices are easy topics. They carry good weightage, 8 marks each. Correct now? So if you start with the easy topics, you will have a good start. Okay, and logic, matrices, इनमें sums भी काफी easy होते हैं, right? And you have been doing since your beginning of the year. We'll start with the, then we go for the derivatives and application of derivatives. Both are similar topics, right? Then we'll go for integration, because integration is based for the remaining topics. For example, definite integration, application of definite integration, and obviously differential equation, we require both integration as well as derivatives. So this is suggested sequence for practice. If you are comfortable and you are good with the integration, you can switch few topics. For example, after application of derivatives, you can directly go for definite integration and application of definite integration, and then later on go for integration and differential equations. And whatever works for you students, if this sequence works for you, go for it. And if you go for easier topics first, you can go for that as well. Okay, so next thing is time management. Again, this is very important thing for us during the exam while you are writing the paper. Time management is the key. Question 1A, which is of, our rule is very simple. For 1 mark, we are going to allot 2 minutes. For example, question 1A, 6 MCQs are there. So 6 2s are 12. तो हम लोग उसको 12 minutes allot करेंगे. Question 1B, again, 3 marks. So 3 2s are 6 minutes we are going to give it for it. Question 1C, 3 marks, 3 2s are 6 minutes. So for question 1, we are going to allot 24 minutes. For question 2A, 6 marks, so 6 2s are 12 minutes for it. Question 2B, 8 marks, so 8 2s are 16 minutes for it. So for question 2, we are going to allot 28 marks. Question 3A, 6 2s are 12 minutes for it. 3B, 4 marks, so 4 2s are 8 minutes for it. Question 3C, again 4 marks, 4 2s are 8 minutes for it. So total 28 minutes. So if you add this to 24, add these three, 24 plus 28 plus 28, total would be 80 minutes. Okay. The remaining 10 minutes, we are going to recheck the paper. Whether you have written all the answers, you can go for the calculations, correct? Final answers, for activities you have drawn boxes or not. इसके लिए हम लोग 10 मिनट रखेंगे. So for maths 1, 80 plus 10, total would be of 90 minutes. Now students, see, in maths 1, try to save as many minutes as you can. जितना जल्दी हो सके उतना कर लो. अगर आपने यहाँ पे टाइम सेव कर लिया, that time you can utilize for maths 2. Correct? तो जितना हो सकते टाइम बचाने का कोशिश करो. Let's go for the next slide. So time management for section A 90 minutes. ठीक है, थोड़ा 5-10 मिनट ऊपर नीचे चलेगा, that you can manage during the exam. Section 2 again 90 minutes, total 180 minutes. One more suggestion, if you can please solve one paper for 180 minutes at home. I'm telling you, before the exam, with the same time management. Try to have one practice for time management, so that you can repeat it better in your actual paper, board paper. Okay. So maths 1, 40 marks. Let's understand chapter wise what we can do. Okay. So chapter 1, logic for 8 marks. Now these are the few topics given. For example, was it a statement or not? Prove the given sentence statement or not, write its truth value, symbolic or converting symbolic form into verbal form, or verbal form into symbolic form, truth tables,
negation of statements, converse, contrapositive inverse, quantifiers, algebra of statement, and Venn diagram. Mainly these are the topics for the logic. Now, if we see from last few years, this 8 marks is distributed as like 1 plus 3 plus 4, or 1 plus 1 plus 3 plus 3, or 1 plus 3 plus 4. I'm just telling you, giving an example कि पिछले कुछ साल से उसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है. So this chapter is very important for 4-mark question. Okay, easy topic but important for 4-mark questions, especially like a truth table. ठीक है ना, राइट. ट्रूथ टेबल का क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आ सकता है. 3 मार्क्स के लिए कैन गो फॉर कन्वर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव इनवर्स, राइट, और statement or not, right, its truth values or negations. These are few important topic for logic, and it's a very easy topic, student. You can do it thoroughly. जितना हो सके अच्छे से ये टॉपिक कर लेना, because you have a lot of options for difficult topics. Then chapter 2, matrices, again for 8 marks. These are few topics: addition or subtraction of two matrices, transpose, singular or non-singular, means type of matrices, then multiplication of two matrices, inverse of matrices, in which elementary transformation method, adjoint method, सॉल्विंग इक्वेशंस में हमारे पास है रिडक्शन मेथड एंड इन्वर्जन मेथड. ये चार को हम लोग फैंटास्टिक 4 बोल सकते हैं. फैंटास्टिक 4 इसलिए कि इसमें का टॉपिक मार्क्स, इसका क्वेश्चन रिपीट होना ही होना है. Again, for last few years, the mark distribution for this topic was 1 plus 3 plus 4, 4 plus 4 और 1 plus 3 plus 4. मतलब इसमें भी 4 मार्क का क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस है. तो जैसे कि यहाँ पे एडजॉइंट मेथड है, रिडक्शन मेथड है, फिर रिडक्शन मेथड में आपके वर्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना. इन्वर्जन मेथड है, इन्वर्जन मेथड में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ठीक है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स रिपीट हुए. सो प्लीज गो थ्रू दीज क्वेश्चंस, ठीक है. एक एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला सम्स भी आता है, और यू कैन से मल्टीप्लिकेशन में फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए. ओके, सो प्लीज डू दिस टॉपिक अगेन वेरी थरोली, राइट. Then chapter 3, derivatives. Acha, these are the few important you can say topics from it: composite functions, logarithmic differentiation, implicit function, parametric function, higher order derivatives, marginal demand और rate of change of demand. अब ये चैप्टर 3 में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा देखा गया कि 3 plus 4 या फिर 1 plus 1 plus 1 plus 1 and plus 3, टोटल 7 मार्क्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस. अगेन 1 plus 3 plus 3, ठीक है. सो अगेन यहाँ पे 3 मार्क के क्वेश्चंस रिपीट होने के ज्यादा चांस है, 4 मार्क का भी आ सकता है, ठीक है ना. नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इट? इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, ठीक है ना, जिसमें प्रूव दैट सम्स है, ठीक है ना, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. और यू कैन गो फॉर पैरामीट्रिक फंक्शंस, वो भी बहुत बार रिपीट हुए. हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के भी कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए, उसके प्रूव दैट भी रिपीट हुए, ठीक है ना. स्टार्टिंग के कंपोजिट फंक्शंस के एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस भी कभी कभी रिपीट हुए हैं. तो डेरिवेटिव्स भी आप, अच्छा हाँ, आई सजेस्ट यू दैट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बिट लेंथी, थोड़े बड़े सम्स है, तो इसको आप लास्ट में रखो, बाकी सब पहले अच्छे से कर लेना, फिर एंड में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करोगे, दैट वुड बी बेटर. ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट चैप्टर, विच इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. So this is a very, I can say the most important topic of maths 1. 9 marks, weightage भी अच्छा है, very easy topic, limited concepts. आप देख सकते हो, increasing decreasing function है, maxima minima है, equation of tangent and normal, elasticity of demand and propensity, MPC, APC, MPS, APS. इस very easy topic और बहुत important topic है. इसमें तो कुछ भी ऑप्शन में मत छोड़ो. This would be very good options for difficult topics और lengthy sums, ठीक है. इसमें जितना अच्छे से कर सकते हो उतना अच्छे से करो, ठीक है ना. इसमें के जैसे मैक्सिमा मिनिमम क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हुए, प्रोपेंसिटी, मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज रिपीटेड. हाँ, इफ यू वांट यू कैन लीव इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल एट द एंड ऑफ द टॉपिक, बाकी सब खत्म कर लो और आप उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल कर लेना, दैट वुड बी बेटर, ठीक है. Let's go for chapter number 5, integration, for 7 marks. These are the few topics again. There are few corollaries, corollary 1 and corollary 2, ठीक है ना. important corollaries, इसके questions repeat हुए. integration by parts, again very important, ठीक है.
इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के सम्स रिपीट हुए, ठीक है ना. दिस इन अगेन स्पेशल कॉन्सेप्ट फॉर ई रेस टू एक्स. इसमें मैं और एक सजेस्ट करूंगा कि सब्सटीट्यूशन वाले सम्स है वो भी रिपीट हुए, ठीक है. हाँ, बट वेन एवर यू आर राइट डूइंग द सम्स और यू आर यूजिंग करोलरीज, प्लीज मेंशन देम, ठीक है ना. मेंशनिंग करोलरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू आर solving the by parts का sum. Write down integration by parts, write down the formula, that's very important. Then we have super 6. इसमें हमारे पास है 1 upon quadratic, linear upon quadratic, 1 upon root quadratic, linear upon root quadratic, रूट क्वाड्रेटिक एंड लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक. ये अपने सुपर 6 है. इसके भी सम्स बहुत बार रिपीट हुए. कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वी से क्वाड्रेटिक सम्स में सब्स्टिट्यूशन के साथ जब क्वाड्रेटिक आता है, ठीक है ना, that becomes very important. अच्छा, I suggest before you start doing the quadratic का sums, please revise completing square method. बहुत सारे स्टूडेंट्स को completing square method में प्रॉब्लम होता है और फिर उनको स्टेप स्टार्टिंग के समझ में नहीं आते. इट बिकम इट फील्स सम्स आर डिफिकल्ट. बट अगर आप वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अच्छे से करोगे, इसके फॉर्मूला अच्छे से करोगे, आई कैन से यू विल बी एबल यू विल बी एबल टू डू इट वेरी इजीली, ठीक है. So this was chapter 5. Acha, next topic is chapter 6, definite integration. In a definite integration, again very simple topic, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा टॉपिक है. एंड अगर आप ध्यान दोगे, ये प्रॉपर्टी बेस्ड सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें प्रॉपर्टी बेस्ड सम्स आते ही है, मेनी टाइम्स दे आर रिपीटेड, ठीक है. इवन इन दिस इन एक्सरसाइज 2, बट इवन इन एक्सरसाइज 1 वी हैव नो सिंपल सम्स, ठीक है. तो इसके प्रॉपर्टीज अच्छे से करो, उसके बेस सम्स देख लेना, ठीक है ना. ये बहुत इजी टॉपिक है, इसमें भी कुछ ऑप्शन में मत छोड़ना. सेवेंथ, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, अगेन वेरी वेरी स्मॉल टॉपिक, ठीक है ना. इसमें भी क्वेश्चन बहुत रिपीटेड हुआ है. एरिया वाले जो क्वेश्चंस अगर आप देखो, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड एरिया ऑफ एलिप्स, फाइंड एरिया ऑफ पैराबोला, ठीक है ना. ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए, ठीक है. अगर मैं आपको इसका बोलूं, इसको तो नॉर्मली तो अभी तक देखा 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आया लास्ट 2-3 years, इफ आई कैन इफ आई गेस, इफ आई रिमेंबर क्लियरली, ठीक है. तो इसमें हाँ, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको सर्कल का इक्वेशन पता होना चाहिए, एलिप्स का इक्वेशन पता होना चाहिए, पैराबोला का इक्वेशन पता होना, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, उनके इक्वेशन का फॉर्म क्या है, ये स्टार्टिंग में आप करो और फिर इसके सम्स कर लेना, देन इट वुड बी वेरी इजी, ठीक है. Then let's go for differential equation, chapter 8, biggest topic, ठीक है ना. It's for 10 marks, showing 5 marks, which is for 10 marks in total, ठीक है. अच्छा, इसमें क्या क्या है, फॉर्मिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना. देन सेकेंड टाइप इज सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन. इसमें 3 सब टाइप्स है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वर्ड प्रॉब्लम्स. अच्छा, इट्स अ बिग टॉपिक. सो इसको करने के लिए हमारे पास कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू कैन डू, फर्स्ट डू टाइप 1, फॉर्मिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, डेरिवेटिव्स है, ठीक है ना. इट्स इजी, टाइप 1 इज वेरी इजी कंपेरेटिवली, ठीक है ना. तो आप पहले फॉर्मिंग डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से खत्म करो, फिर गो फॉर वर्ड प्रॉब्लम्स डायरेक्टली, ठीक है ना. वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन से, 2-3 टाइप के क्वेश्चन से, एक टाइप तो बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना. तो आप वर्ड प्रॉब्लम्स अच्छे से कर लो, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है. देन गो फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मेट में डालना है, ठीक है ना, फॉर्मूला अप्लाई कर देना है. Then we have variable separable method. Go for variable separable method. I suggest homogeneous differential equation. Sums are bit lengthy. So what you can do it at the very end में, ठीक है ना, लास्ट में कर लेना उसको. Okay. So these are nothing but the chapters we have discussed. Then let's go for the presentations, paper presentation, and the common mistakes we do while writing the paper. So this is one answer sheet. Observe question number 1, A, objectives are attempted, ठीक है. क्वेश्चन 1 है, ऑब्जर्व उन्होंने क्या क्या अच्छे से क्वेश्चन लिखा है, ऑप्शन लिखा है, एंड देन द राइट आंसर, ठीक है. सो दिस आई सजेस्ट इफ यू फॉलो द सेम थिंग, इवन इफ ऑब्जर्व द क्वेश्चन second MCQ, again question is written, option and the answer. हाँ, if you are short of time,
See, even if you don't write questions, fine, but writing option and answer is compulsory. Okay. हाँ, but I suggest अगर हो सकता है questions लिखो, but it's not compulsory. Okay. Then let's go for question 1B. Again, of the question is written and the proper statement. The given statement is true. The given statement is false, and it's underlined. Okay. So for corrector, it becomes easier to correct, right? And it's a very good presentation. 1C, fill in the blanks. If you can see, question is written and every answer is underlined and it's visible, darker, एकदम लाइट नहीं है. तो आप भी ट्राई करो कि आपको अच्छे से दिखे, ऐसे ऐसे अंडरलाइन करना है. देन क्वेश्चन 2A, सी ट्रूथ टेबल का समय, you know, properly columns are made, headings are properly visible, ठीक है. And very important, at the end conclusion is written. Many of the time students, they make a truth table but then they don't write conclusion and they lose marks. So observe, since all the truth values in the last column are true as well as false, so the given statement is contingency. You have to write with the contingency, tautology, contradiction, so you have to mention it. See the question 2B. In we have to solve equations. So first, they have form, equation of matrices or equation in the form of matrices. Okay, and properly solved over here. And very important thing, see at the end on the right hand side page, by equality of matrices. When at the end when we are going to equate corresponding elements, then you have to write by equality of matrices. Please don't forget to write proper reasons. If you can see, values of x, y, z, boxes are there for value of x, value of y, final answer is written. So these are small things you need to, you can say inculcate while writing the paper. Then the third one, ठीक है ना, derivatives का question है. Again, final answer. MPC, APC का question है. If you can just go through, whenever MPC is found, proper box is there. APC के लिए proper box दिया, final answer लिखा हुआ है. ठीक है. So ये छोटी छोटी चीजें याद रखो while writing the paper, and it's better while you are writing it at home. Please follow this. तो एग्जाम में वो अपने आप आ जाएगा. Then this is partial fraction. Okay, again, whenever values of a, b, c are found, ठीक है, it's properly mentioned, and then the final answer, proper equations are given from 1 and 2. Then let's go for question 3A. This is from logic. So it is properly mentioned what is this given statement is there. P को क्या assume किया है, Q को क्या statement assume किया है, it's properly mentioned, its symbolic form is mentioned. Then converse, its symbolic form, its verbal form, ठीक है ना, it's proper. See here, the student has made one mistake. This negation P instead of negation Q was written, but again he properly cancel it out and written freshly. ओवरराइट नहीं किया, ओवरराइट में कंफ्यूजन आता है, ठीक है ना. सो इट शुड बी प्रॉपरली विजिबल. कैंसिल हो रहा है तो अगेन उसको अच्छे से लिखो. देन द फाइनल आंसर अगेन, ठीक है. देन वी हैव डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, ठीक है. इफ यू कैन जस्ट गो थ्रू, राइट. देन क्वेश्चन 3B, सी indefinite integration sum, the proper property is mentioned before using it. Okay, so this is very important. So you are mentioning all the properties, corollaries. Okay, then we have question 3C, activity based question. Again, I told you it's very important, okay, that you are making proper boxes. See, you have to write the whole solution. एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, जितना वहां पे लिखा है उतने स्टेप्स लिखो, बट उतना लिखना कंपलसरी है. ड्राइंग बॉक्सेस फॉर आंसर, ऑब्वियसली विद द राइट आंसर कंपलसरी.
ओके, हाँ वो विजिबल होने चाहिए प्रॉपर, बॉक्सेस बॉक्सेस करना भूलना मत, ठीक है। सो दिस इज अ पेपर प्रेजेंटेशन फॉर यू. So, if you follow this, all these things that we discuss, right from the your mark distribution, then paper pattern, then we discuss about your time management, chapter wise what are the important topics, and again paper presentation, ठीक है, and the silly mistake that those we need to avoid. इतना अच्छे से करोगे स्टूडेंट्स 40 on 40 फिक्स है, ठीक है. हाँ, लेट्स रिवाइज द इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स. फर्स्ट, प्लीज अलॉट टाइम फॉर योर ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों से बहुत नेग्लेक्टेड रहते हैं, एक्टिविटीज नेग्लेक्ट रहती है, तो उनके लिए अलग से टाइम दो. उसमें फुल मार्क्स आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स के लिए ऑप्शंस नहीं है, थियरी के लिए फिर भी ऑप्शंस है. ओके, सो आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है, and all the best for your exam. Thank you very much.